Okay, are we live? We should be live. We should be live. Okay, I think we are live. पता चल जाएगा अभी कुछ ही सेकेंड्स में. ओके या नोटिफिकेशन इज देयर. मैं ऑडियो चेक कर लेता हूँ. व्हाट्स गोइंग ऑन. यहाँ पे पहले तो ऐड आ गई है. अरे भाई साहब यूट्यूब क्या बात है. अच्छा जो आ गया है पहले तो आके मेरे को कमेंट्स शुरू कर दो कि हम आ गए हैं भाई. तो आवाज़ ठीक है एकदम से. हयात भाई आ गए हैं. हेलो कैसे हो भाई. ठीक हो सब बढ़िया. ऑल द गुड. सारी चीज़ें गुड गुड. वेदांत भाई. यस्मीन यहाँ हैं. अर्जुन यहाँ हैं. हयात बुक्कड़ पांडा मेरे इंस्टा आईडी. ओके ठीक है. आरव हाय. राज हाय. सागर सारों को हेलो हेलो हेलो. और यहाँ पे आपके सामने है जस्ट 3 मिनट 3.5 मिनट लगा लो रह गए. Redmi Note 10s यहाँ पे लॉन्च होने वाला है Redmi की तरफ से और बहुत मज़ा आने वाला है. सैवेज परफॉर्मेंस स्टनिंग कैमरा. Redmi Note 10 आया. उसके बाद यहाँ पे Redmi Note 5G भी आएगा जो कि यहाँ पे Poco M3 Pro 5G बन के आएगा. वी ऑल नो दैट. बट अभी के लिए ये आ रहा है Redmi Note 10s. और हाई टू एवरीवन. गेमर्स बॉय हेलो. नागराज गुड. टेक केयर. गुड जॉब. थैंक यू. शालिन हेलो. ओके अभिषेक हेलो. 12.5 भी आ रहा है. गौरव अभी देखते हैं क्या क्या आता है. अजीत हेलो. एग्ज़ाम हेल्प हेलो. दुर्गेश भाई मैं बढ़िया हूँ आप बताओ. आदिनाथ भाई लव यू. ओके दिस फोन एमुलेट डिस्प्ले. अर्जुन एमुलेट ही होना चाहिए. उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है इनके पास अभी. मज़ा नहीं आएगा नहीं तो. ओके अजीत तनवार हेलो. कैसे हो आप. तो यहाँ पर फटाफट से लाइक करना शुरू कर दो. जैसे जैसे आ रहे हो वैसे वैसे लाइक करते रहो. मज़ा सा आ जाए. टॉप क्लास एकदम जो देख रहे हो लाइव लाइक मारते रहो. सो यहाँ पे मज़ा आ जाएगा. एंड आप सबके लाइक एकदम से मोटिवेट भी कर देते हैं. और आप अपने लिए भी लाइक ज़रूर मारा करो क्योंकि आप देख रहे हो और आपके लिए भी बनता है. हर्ष मैं बढ़िया हूँ. अंसारुल SN गेमिंग आए हैं. रिव्यू यूनिट्स कहाँ यार. हमें तो नहीं मिलेगा. बाकियों का पता नहीं. फ्री फायर प्लेयर हेलो. स्नैपिंग हेलो. टेक्निकल टेक सूजल व्लॉग्स हेलो. गौरव सागर प्रेम वेदांत GS चौधरी. ओके स्नैपिंग है यहाँ पे. राहुल कुमार आदर्श कुमार फ्रॉम कोलकाता. क्या बात है. एवरीथिंग स्पेशल. रिफ्रेश रेट कुछ ज़्यादा होगा पता नहीं अभी. प्रेम कुमार हेलो. हयात SN गेमिंग बोल रहे हैं कि ब्रो हेलो क्या लगता है रिव्यू यूनिट्स. ये तो हो गया हमारा है ना. अर्जुन अभानी लाइक डन. क्या बात है भाई. बाकी सब लाइक कर दो. आदर्श भाई कोलकाता से देख रहे हो. क्या बात. यूट्यूब का प्रीमियम ले सकते हो अगर आप ऐड से ज़्यादा प्रॉब्लम हो. मैंने आज तक प्रीमियम लिया नहीं वैसे. मैं मोर ज़रूरत नहीं पड़ी कभी. GS चौधरी. हर्षल भाई मैं बढ़िया हूँ. GS भाई आप बताओ. ओके प्राइस अभी यार देखते हैं क्या होती है. और नोटी AA ओके लॉन्च आ गया है. लेट्स सी. ये था Redmi Note 10. When in pursuit of power, हाय नोटी AA. लाल बहादुर सिंह जी. one Zenfone must 8 be able series to ठीक see है. the Not big मैं picture. कहूँगा प्राइसिंग देखेंगे इंडिया में क्या आती है फिर हम डिसाइड करेंगे. But also pay attention to detail. हर्ष कोई बात नहीं भाई आज आ गए आप. True power will show you what others cannot see. True Like power the Redmi will Note make series itself 10 evident वाली, to you बग्स बहुत है MIUI में. and to others. 120 Hz सुपर AMOLED. ये Redmi Note 10 Pro होगा या Max whatever. The pursuit may go on around the clock, but the power pushes you to work against it. GS भाई मैं बढ़िया हूँ. आप कैसे हो. थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. और ऐसे ही साथ निभाते रहो. वीडियो को लाइक करते रहो. इस लाइव को लाइक करो सारे के सारे. मजा आ जाए. कलर्स अभी पता नहीं यार सेम ही होगा. पोको तो हमेशा रीब्रांड करता है ना. नई बात है. Redmi Note 10 Pro Series. ओके 1 सेकंड में The pursuit of power.
2019 से देख रहे हैं नोटी ए, क्या Fine. बात है। Let's go. Love you. Hello आगे and भाई welcome साहब। to all of our Redmi fans. We sincerely hope that you're all doing well and staying safe. These are unprecedented times in our recent history, and the best thing to do right now is to stay masked, stay safe, and take care of your near and dear ones. These are indeed dark times, but we have to be optimistic that this would all be behind us really soon. And on that note of positivity, we have something exciting to share with you. We've Hi, always Shivesh. been innovating for you. You are the reason why we continue to push the boundaries of what's possible and make fantastic products that keep you happy. And it is because of you that today we are the #1 smartphone brand in the country and perhaps amongst the most नंबर 1 loved स्मार्टफोन tech ब्रांड brands. तो सभी ब्रांड्स बोलते A हैं। lot of our success is thanks to you. So sit back, grab a snack while या आज we मन्नू take भैया you नहीं आए, on a बिल्कुल आज journey. मन्नू भाई नहीं आए हैं। The journey of पता नहीं MI कहाँ गए। India brought to you entirely from our homes. This year, MI India started off with a bang with the launch of the game-changing Redmi Note 10 series. The Redmi Note 10 series has been very well received, and we notched up sales of over 500 crores in just the first 2 weeks. Talking about market share, MI India has been the #1 smartphone player ये भी since तो बताओ quarter bugs 2 कितने हैं? of 2017 खतरनाक वाले। as per IDC's quarterly smartphone tracker. That is 14 consecutive quarters as बस the करो #1 राहुल, एक ही smartphone क्वेश्चन brand बार in the जिसका country. जवाब नहीं मिलेगा तुम्हें कुछ While भी। we take great This is not pride a in our business achievements and adult successes, channel. for us, it's never been just about the business. We've always been conscious and focused on making a social impact and are continuing to do so even during the COVID pandemic. इन नोट 1 नहीं During यार, the ओवर हीटिंग pandemic, मैंने नहीं देखी कोई। MI India has already undertaken multiple initiatives to support our employees, Hello, Ritik. our partners, and the राहुल जाना public ब्लॉक at कर large. दूंगा मैं। We encourage all of you to head over to me.com and figure out how you can support those impacted in these challenging times. And now we have a special message from someone who is already impacting millions of lives in India. नमस्कार सोनू दोस्तों, मैं भाई। आशा करता हूं कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, ठीक ठाक होंगे। 2020 में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा मुहिम शुरू किया था जिसका नाम था शिक्षा हर हाथ। मैंने और MI इंडिया ने उन सब बच्चों को जिनकी ऑनलाइन क्लासेस मिस हो रही थी या जिनके पास मोबाइल फोन्स नहीं थे, हम सब लोगों ने उन तक पहुंचकर उनकी शिक्षा उन तक पहुंचाई। 2021 ये समय पहले से भी ज्यादा मुश्किल है। हमारे हेलो, बहुत अमन। सारे अपने दोस्तों ने अपने परिवार वाले खोए, बहुत परिवारों ने शोएब घर के ब्रेड विनर्स खोए। मैंने और MI इंडिया ने मिलकर राहुल कुमार नहीं, वापस राहुल शुरू जैना। की है। इस शिक्षा हर हाथ स्कॉलरशिप्स को हम एक नए मोड़ पर लेके जाएंगे। जिन बच्चों ने अपने माँ बाप खोए, शोएब क्या हाल है? जिन बच्चों के सर पर अमन उनके बिष्ट, माँ-बाप का shout हाथ out। नहीं रहा, हम उनका हाथ थामेंगे। जल्द ही हम एक वेब लिंक इशू करेंगे जिसमें वो हर बच्चा कैजुअल यूज जिसने के अपने लिए माँ-बाप रोप फोन को लेना ही क्यों? वो उनका आप हमें इंफॉर्मेशन भेजिए, हम आपको यकीन देते हैं राहुल कि साहनी, हर एक बच्चे की एजुकेशन शाहिद, हम पूरी करेंगे। कोई भी बच्चा जो ऋतिक, deserve करता है पढ़ना, जितेंद्र, हम उसकी education अनिर्बान। जरूर देंगे। हमें आपका साथ चाहिए और उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर अपना योगदान जरूर देंगे और हर बच्चे को जरूर पढ़ाएंगे। तो सोनू सर Thank कह you, रहे हैं Sonu कि bhai, आप थोड़ा for सा the ट्राई करो, beautiful अगर आप message बच्चों की and हेल्प for कर सकते हो leading तो such जरूर a से करो। positive social cause. शिक्षा हर हाथ। Moving ahead, let's get down to something that we Pritam, know you care Pavitra. about. Yes, the software experience on our phones. For us, दोन ताला you, गणेश, our समीर fans, भाई। have always been चलो our greatest MIUI का रेवोल्यूशन inspiration. बता रहे हैं कि हम पहले Our थोड़े से MIUI स्टेबल होते थे और अभी legacy थोड़े is बगी हो one चुके हैं। big showcase फिर उसके बाद as to और भी how बगी हो your चुके हैं love, और हद हो चुकी है बग्स affection की। and feedback has helped us evolve all the way from MIUI 1 to MIUI 11. You, our fans, have always been open, honest, and vocal about the feedback that you have given us. So many of you have experienced MIUI, oftentimes on devices not from MI, and that is courtesy the custom ROMs that are easily available on the internet.
We are sure that you did that because you found the experience to be simple, जल्दी से जल्दी लाइक elegant, मार दो guys. and functional. Last year saw the launch of MIUI 12, our decade's masterpiece. This not Okay, only Rahul, marked thank the you. 10th anniversary of the first ever MIUI released on 16th August 2010, but also brought Decade together का a masterpiece MIUI decade's 12. understanding of software and user सॉफ्टवेयर experience के to मामले में build मैं यहाँ पे something Xiaomi का सॉफ्टवेयर सबसे incredible. नीचे रखता हूँ MIUI. This ushered in बग्स ही many बग्स हैं, changes, भर पड़े हैं. starting with Features अच्छे हैं refreshing but of भरे the पड़े हैं. entire UI, from small changes like icon animation to big decisions like animation flow of content, visibility of important information like battery stats, about phone, etc. The visual pleasure of opening about phone and looking at the storage move with the accelerometer is simply so satisfying. Won't you agree? Talking about the visual pleasure of doing something different and unique, मैं शिवेश in बिल्कुल MIUI इस 12 पे देखता we've हूँ. introduced super wallpapers. Many of our fans have already started using it. In fact, we know of quite a few people who have side-loaded it on a non-Mi or Redmi phone just to get the visual pleasure of super wallpapers. But of course, it comes nowhere close to the actual pleasure of seeing it on a Mi or Redmi phone. We've also brought some new features like ultra battery saver mode, system-wise dark mode, and lots more. It has been your feedback that's always given us direction. Because after all, when our Redmi fans want यार something, गैस करना they मुश्किल say है. that because they truly सुभादीप care. इसके And ऊपर that's always सोचता हूँ वीडियो served बना दूँ. as direction सोचता and हूँ. नहीं तो inspiration शॉर्ट for आ us जाएगा. to keep pushing the boundaries and make our holistic experience even better. And your feedback to us was crystal clear. Our software that's cleaner, सिर्फ faster, पॉजिटिव कमेंट सिखाएंगे कभी and बुरे simply वाले. more efficient at doing things. We took your feedback seriously and now are pleased to bring you 12.5. MIUI 12.5. Just a small step in a version change, but a giant leap forward in terms of the experience. In order to deliver an optimized system experience, भाई राहुल, we've मैं rewritten जलंधर पंजाब. the entire system UI, reducing core scene memory usage by 20%. In our recent tests, the CPU usage has reduced by up to 22%, while power consumption has reduced by up to 15%. So now you'll enjoy a lighter, smoother system experience with significantly longer battery life. We've also prioritized our features. Take system level full screen gestures for instance. In previous devices, the gestures and other tasks were rendered on a single thread, which meant that gestures competed with CPU usage with other apps. But with MIUI 12.5, we have prioritized gestures so that your actions on the screen get priority so that you can get instant feedback to whatever action or gesture that you're taking on the screen. The preloaded software like calculator, camera, gallery, security, notes, recorder, etc. are also now a lot more cleaner. Since we've always focused on giving you the best user experience, we've set right every app from scratch, starting from an AI-powered feature-loaded camera, an intuitive gallery, to a smart calculator with features like currency conversion based on online data. You also had a specific ask to enjoy all these features and also have the freedom to not have them if you didn't want them or were not using them. And we said, why not? Every effort in the past decade has been to make sure every you, Rahul. feedback Thank you. is heard and implemented. Okay, So uninstallable now apps हैं ये. you have the कुछ division बीच वाली. between core apps, which are fundamental apps essential to the functioning of the phone. Apps such as the phone dialer, messaging, camera, gallery, and so on, to keep the UI functional. And then there are additional apps which can either be uninstalled or removed. With these, you have the freedom to uninstall and remove anything that you Record. don't want,
and keep the stuff that you Weather, want to make the entire experience compass, customized to your calculator. preference. This makes MIUI 12.5 the cleanest MIUI experience ever. In fact, I'll go to the extent of saying perhaps Thank you, the Rahul. cleanest phone UI in recent times. Now, why would I say the cleanest phone UI in recent times? Now, let's face it, even the most expensive of those flagship devices do have some core system apps that you cannot uninstall. In this comparison, that you would see that MIUI सुभादीप, इसके ऊपर मैं कुछ बना 12.5 दूंगा, system वेट कर लो apps अभी। are the least and most minimal as compared to some of the more established flagship devices out there. But then you must be wondering, how about the other competitive brands out there in the market? Let's look at the process of some of these devices getting set up and how many apps you actually end up with on a brand new device. Now here's MIUI 12.5 compared to some of the other softwares. Could any of these claim to have a 10-year legacy? Perhaps not. Now while we do stay in the limelight every now and then, भाई the fact एड्स कौन remains देता है that सबसे ज्यादा, अभी every बताओ ना। widely अपनी available MIUI के अंदर Android UI out there बाकी UIs में does इतनी ऐड contain नहीं some आती जितनी ads. इसमें आती है। Don't take my word for it. This is what people on social media are saying. So there you go. That's MIUI 12.5 for all of our fans. The cleanest MIUI experience ever. Mind you, this is only the prelude. The moment that all of you have been waiting for is here. Introducing the all-new smartphone from Redmi. Note 10s. The savage, the supreme, the stunning Redmi Note 10s. Note 10 The सीरीज में newest कितने नोट आएंगे addition भाई, to the पहले ये बताओ Redmi पहले। Note series. The Redmi Note 10s with savage performance and a stunning camera. Now, इसमें here's a little G95 trivia. हो सकता है जहां तक मुझे Given याद the है। current scenario, this video is entirely shot at home on a Redmi Note 10 series smartphone. Truly innovation at its best. We created this Redmi Note 10s as a trendier, youthful and more stylish device, keeping the ethos of the Redmi Note series intact. Now, let's dive deeper into its power-packed features, starting with the design. As you can see, it is slim, sleek and absolutely stylish. The Redmi Note 10s is designed to ergonomically fit मतलब in काफी your हद तक hand Redmi and your Note 10 pocket. जैसा ही है With डिजाइन, its बट sleek हल्का फुल्का and सा lightweight माइनर body, से अलग से the fabulous design is all thanks to our evolved design philosophy, inspired by love. We believe that there's always room for improvement, so I we think gave glossy birth black to है a ये। whole new design philosophy. An Plastic होगा, evolution obviously. that has had the smallest of elements making a great impact. We call it Evolve Design. Yes, 10K Let's के take अराउंड you इन through वन ले the सकते हो। latest color palette for the season on the all-new Redmi Note 10s. And here they are. The mesmerizing deep sea blue for the ones who love to explore. The frost white for the minimalists out there. And the stealthy shadow black for the classy bunch. Now, for the most anticipated feature, the camera in the Redmi Note 10s. The phone comes with a quad camera setup which enables you to explore a wide variety of photography opportunities, making this a brilliant choice. Yes, it comes with a 64 megapixel primary sensor in the rear camera, which is the second highest resolution available in a smartphone in today's age. अच्छा लाइक This किसने नहीं किया, बहुत allows गलत बात है, for लाइक मार देना। detailing of images that you'd normally miss out, even capturing details missed out by the naked eye. It also comes with an 8 megapixel ultra wide camera with a 118-degree field of view. Oh my Great God. for capturing landscapes God. and scenery around you at its extravagant best. बाकी के दो दो And मत for दे देना। those
who like the little details in both things big and small, there's the 2 megapixel macro lens with a 2x zoom, which gives you a clear perspective चलो अच्छा है, even ये of the macro tiniest अच्छे वाला है. details. And that's not all. It also comes with a 2 megapixel 2 depth megapixel sensor depth. Wow. that can take those Wow. perfect bokeh shots that we all love, keeping the focus on the things and people that you love. The Redmi Note 10s helps you create stunning images with multiple options that give your photos the added quality that's hard to come by in general. Now experience photography like never before. The Redmi Note 10s comes with Pro time-lapse mode that lets your time lapses feel like a living, breathing world. The skyscaping mode is perfect for capturing skylines. It also helps customize and beautify these captures to your liking. Furthermore, the Redmi Note 10s has Pro Color, which enhances the vibrancy of a picture, making each individual color pop. The color focus feature exclusively lets you focus on the colors that you love in a particular image. This allows you to retain a single color and create the rest of the image in black and white. The night mode now gives you better night shots with more exposure, making it almost seem like a daytime capture. This beautiful combination of hardware and software lets you shoot like a pro, even in very, very complex and challenging light situations. Now, for all you Low light selfie में lovers, मेरे को Note 10 Pro the इतना खास Redmi नहीं Note लगा था, 10s Note 10 Pro comes with a Max. 13 megapixel front camera to capture those perfect selfie shots like this one. That turned out quite well. Here's the 3.5 mm in-display punch hole for the selfie camera. It is strategically placed to allow for a seamless screen experience. Now let's move on to the Redmi Note 10s display capabilities, shall we? The Redmi Note 10s has a 16.33 centimeters, Super which is AMOLED. a 6.43-inch Super AMOLED display that makes for an immersive content मुझे लगता viewing था कि 60 experience. fps होगा. So now you six- can binge watch 60 hertz. all your favorite content in super high But quality. it's good Super AMOLED. The display 1100 comes with peak 1100 brightness. nits of peak brightness, which keeps your phone highly visible even on bright sunny days, and is also SGS certified for low blue light, which reduces the strain on your eyes. The 360-degree ambient light sensor perfectly adjusts the brightness to adapt to your surroundings. The Redmi Note 10s also has 100% DCI-P3 support, which okay. means a wider color gamut that enhances vividness and makes each color more vibrant than ever before. A contrast ratio of 4.5 million:1 creates a phenomenal spectrum of black and white with the dynamic range that will help soothe your eyes. Now we know how important gaming is to Redmi fans. So the Redmi Note 10s 180 comes hertz with a touch sample. 180 hertz touch sampling rate, which reduces input lag to give you pinpoint accuracy while gaming. And what makes it even more amazing is the immersive Rahul audio Jaina. hardware that enhances sound quality to Dual give you speakers. sound that is crisp and clear. These are auto cleaning speakers that expel dust to ensure that your speaker mesh is always clean and the audio performance is never jarring. And for all you gamers out there who are waiting to know how your games would run on this device, the answer is savage. The MediaTek To be more G95. specific, to get this savage performance on the Redmi Note 10s, we imagined a device that could absolutely do it all. We have integrated Yes. the MediaTek Helio G95 chipset with Hyper Engine game technology, which means this smartphone has the graphics department more than covered. The CPU has ARM Cortex A55 and the ARM Cortex A76, which is clocked at 2.05 GHz, paired with the Mali G76 GPU clocked at 900 MHz
to give you a powerful performance that makes games run at the smoothest possible frame rate. It also has स्मूथ 6 GB of LPDDR4X RAM that PUBG के allows for smooth online gaming experience 6 GB while enabling LPDDR4X. seamless multitasking across numerous applications. The 6 GB LPDDR4X RAM also supports the 64 megapixel camera on the Redmi Note 10s. Now don't let others kid you by saying 4 GB is enough. It perhaps isn't. It also has UFS up to 2.2. 128 GB of UFS 2.2 internal storage. आपको I think दो that variants gives you मिलेंगे, इसमें tons of UFS space 2.1 होगा, to एक store your 2.2 होगा, ऐसा photos, होगा. videos, games and much more. And because it's UFS 2.2, it's significantly faster than before. The Redmi Note 10s is the first device in India to have MIUI Philip गाली 12.5 नहीं. out of the box. MIUI 12.5 is indeed the cleanest MIUI experience ever. While the Redmi Note 10s has an interim version of MIUI 12.5, we are working hard to ensure that all the features are working as planned, and hence some of the features including uninstallable and removable apps will be added on as an OTA update in the near future. Now, about the battery in the Redmi Note 5000 10s, mAh. it comes with a 5000 mAh high capacity battery that can give you up to 680 hours, that is 28 days of तो जिन लोगों को थोड़ा सा कंप्लेंट था 188 प्रोसेसर को hours लेके, of उन्होंने music on the G95 दे headset दिया इसमें. or 77 hours of music with the speakers. थोड़ा It सा comes कैमरा इम्प्रूव है with a नोट 10 से, 33 watt थोड़ा fast सा charger in the box 33 that watt lets you get charger. to 54% of charge in just 30 minutes and full 100% charge in 78 minutes. And if you want even more screen time when your battery is about to run out, you can switch to the ultra battery saver mode that preserves your battery टच सैंपल and रेट lets it होता है कि आप last अपने much डिस्प्ले पे एकदम longer से क्लिक करते without हो या having टच to करते हो तो worry उसका about रिस्पॉन्स losing full कितना आता charge. है, ठीक With है. all the love and affection that we get from our fans, the one thing that we always ensure is to get the quality of our devices spot on, adding on to the already capable feature set in the phone. For example, one of the things that you shouldn't be worrying about is getting the phone's screen scratched, because it comes with Corning Corning's Gorilla Gorilla Glass. Glass protection कौन that सा? makes the Redmi भाई Note कौन सा? 10s ये भी resistant तो to बता दो. scratches and keeps the screen ये intact. 3 होगा. It also comes with Widevine L1 certification that allows you to stream across all of your streaming services. The Z-axis vibration motor allows you to truly feel each and every tab, making it a much more intuitive experience. And of course, the multi-layered graphite sheet that allows for heat dissipation, ensuring that the phone is comfortable to hold. Now we know how important music is to our fans, so we have opted to retain the 3.5 mm audio jack, so you can simply plug budget and में तो play आती your है. favorite songs or music anywhere. The built-in IR blaster आया ब्लास्टर, lets ये you इनकी एक control अच्छी a चीज range है. of home appliances with just a few taps on your Redmi Note 10s. And all the ports on the phone are protected by rubberized seals and are corrosion proof, so that dust and water worries are long gone. I hope all of you are as excited as I am about the new Redmi Note 10s. ओके, लाइक कर Now देना let's गाइस take a फटाफट quick से. look at the हमारे prominent टारगेट features पूरे again. करो, लाइक के The मजा आ Redmi जाएगा Note थोड़ा 10s सा, और has a आपको भी मजा आ powerful जाएगा. quad सो camera वी setup नीड अभी with के a लिए 64 200 लाइक्स. megapixel primary तो lens, जिसने अभी which तक is लाइक the नहीं second किया है वो highest फटाफट से resolution लाइक in कर the दे मेरा entire दोस्त. industry. और It also has a मैं wide happy हो angle जाऊंगा. lens, अपने a लिए लाइक macro कर दे. lens and a depth sensor, so you're ready to click the best photos anytime, anywhere. The Redmi Note 10s owes its savage performance to its octa-core processor Helio G95, which makes all your tasks run simultaneously with greater smoothness than ever before. The super-powered 5000 mAh battery ensures that the Redmi Note 10s can run all day long without needing to be charged. And even if you do, it can be charged in a jiffy.
with the 33 watt super fast charger. Now that we have completely explored the Redmi Note 10s, let's see how it benchmarks with other competition devices in its segment. The Redmi Note 10s comes with an FHD Plus Super AMOLED display with a peak brightness of 1100 nits, whereas the competitors have a peak brightness of only around 800 nits. It comes with the latest MediaTek Helio G95 processor in comparison to its competitors, and not just that, it also comes with the significantly faster UFS 2.2 storage. Combined with a 64 megapixel quad camera setup and a 33 watt fast charger, this device is truly ahead of its competitors. Now that you've witnessed the Redmi Note 10s and how it completely outclasses its competitors, be ready to grab it for its savage performance, stunning camera, and a savage price too. The Redmi Note 10s will be available in two variants. The 6GB 64GB variant for only 14,999 and the 6GB 128GB variant for only 15,999 will be available for sale starting 18th May 12 noon on Mi.com, Mi Homes, Amazon.in and our retail stores. Okay. Be sure to look out for some exciting launch offers too. Now that you've seen all about the Redmi Note 10s, we actually have another surprise for you. And if you haven't already guessed, it's time to wear your vibe. Presenting the Redmi Watch. तो ये जो फ़ोन लॉन्च हुआ मेरे को ज़्यादातर Redmi Note 10 से यहाँ पे ना Realme 8 के साथ इसका कंपैरिजन इतना अच्छा नहीं बन रहा था, तो इन्होंने Realme 8 का कंपेटिटर निकाल दिया Redmi Note 10s, सेम स्पेक्स है Realme 8 जैसी। ओके गाइस, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया अपने लिए लाइक कर देना। जो लाइव देख रहे हो प्यारे प्यारे व्यूअर्स मेरे, लव यू यार सबको। और OMW on my way to you, good at what I do, I'm OMW on my way to you, good at what I do, I'm OMW. Watch me walk away, putting myself on display, 1, 2, 3 a day, I'm on my way, on my way. I'ma have you on tiptoes, watching my diamond afterglow. I know you wanna take me home, I'm on my way, on my way. OMW, on my way to you, good at what I do, I'm OMW. OMW, on my way to you, good at what I do, I'm OMW. On my way, on my way. They wanna judge me, I'll testify. Catch me on Insta, I'm verified. They want me quiet, I amplify. I'm on my way, on my way. The best thing that you've ever seen, you know that you bow to the queen, you lose all your senses and reason. I'll give you something to believe in. OMW, on my way to you, good at what I do, I'm OMW, yeah, OMW, nothing left to prove, so enjoy the view, taking a picture like Malibu, I'ma have you on tiptoes, watching my diamond afterglow, I know you wanna take me home, I'm on my way, on my way. OMW, on my way to you, good at what I do, I'm OMW. OMW, on my way to you, good at what I do, I'm OMW. डेफिनेटली यार प्रो बेटर है यहाँ पर अगर देखा जाए तो। So that's a wrap for the day. A big thank you to all of our fans for being part of this launch presentation.
We request all of you to stay safe, रेडमी वॉच का keep your प्राइसिंग नहीं masks बताएंगे ढंग on, से. practice social distancing, and keep your hands clean and sanitized all the time. And most importantly, do take care of your near and dear ones. Thank you. Goodbye. बाय बाय, टेक केयर, लव यू. सो गाइज, रेडमी का लॉन्च यहाँ पे हो जाता है ओवर. हाँ जी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लॉन्च की गई है और बहुत सारी चीज़ों के बीच में आ जाता है MIUI 12.5, जिसमें सिस्टम ऐप्स है जो कि 22% लेस यहाँ पे CPU कंज्यूम करेंगी, 15% लेस बैटरी कंज्यूम करेंगी. प्रायोरिटाइज जेस्चर्स मी ऐप इकोसिस्टम, जिसमें बहुत सारी ऐप्स जो है वो अभी अनइंस्टॉलेबल होंगी, रिमूव कर सकते हो. मतलब जो रिमूव कर सकते हो वो अनइंस्टॉलेबल नहीं होंगी, वो डिसेबल कर सकते हो आप, और बाकी की जो है वो अनइंस्टॉल हो जाएंगी, जैसे कि नोट्स, रिकॉर्डर, वेदर का कंपास, कैलकुलेटर, पता नहीं कौन कौन सी बेलीएट में. और वॉच जो है वो 4000 की लॉन्च हुई है और उसके फीचर्स ऐसे ही बता दिया, उसके बारे में बकबक ज़्यादा नहीं की इन्होंने. डांस करते गए और वॉच के बारे में बता दिया सब कुछ. क्लीनेस्ट MIUI बोल रहे हैं, पता नहीं कितना क्लीन होगा क्योंकि MIUI आज तक क्लीन नहीं हुआ, कचरा ही भर रखा है उसमें. Redmi Note 10s जो है वो डीप स्ली ब्लू फ्रोस्ट वाइट शेडो ब्लैक के साथ आ रहा है. 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल मैक्रो 2x वाला, और यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है. मतलब वो पूरे बड़े वाले फोन्स में 5-5 के, इसमें 2-2 कर दिए. 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा आपको. 6.43 इंचेस की सुपर एमोलेड जो कि 1100 पीक की ब्राइटनेस के साथ 180 हर्ट्ज के टच सैंपल रेट के साथ है. अच्छी बात है, ठीक है. डुअल स्पीकर्स, MediaTek G95, हाइपर इंजन गेमिंग टेक, गेमिंग अच्छी हो पाएगी, हाँ कोई डाउट नहीं है, गेमिंग अच्छी हो पाएगी. तो वो G32 हमारा जो G32 है, नहीं 732G, उसमें भी अच्छा हो जाता है, किसी को दिक्कत की बात नहीं है. 6GB रैम LPDDR4X वाली MIUI 12.5 है. और मैं बता दूं प्लास्टिक बैक वाला फ़ोन होगा ये. और ये ना MIUI 12.5 में अभी जो वो सिस्टम है बोल रहे हैं ना अनइंस्टॉल वगैरह हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो अपडेट के साथ आएगा, वो भी नहीं. 5000 mAh की बैटरी है, 33 वॉट का चार्जर है जो कि डिसेंट पहले भी मिल रहे हैं. कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास बताया नहीं कौन सा है, दे डिडंट टेल अस. तो ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 होगा क्योंकि बोल रहे थे स्क्रैचेस नहीं बढ़ेंगे, तो 3 में जल्दी स्क्रैच नहीं आते. और वाइड वन L1 जो है ना वो मिल जाएगा यार. Z एक्सेस की मोटर मिल जाएगी जो दुक 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 वाइब्रेट कर देगी. मल्टी लेयर का ग्रेफाइट शीट है जो कि थोड़ा सा कूल करने में थोड़ा मदद कर देगी. रबराइज्ड सील्स मिल रहे हैं. 15,000 से ये फ़ोन शुरू होता है. 18 मई को मिल जाएगा 12 बजे. जिसको यहाँ पे लॉन्च नहीं, जिसको जहाँ पे बुक करना है वो कर सकता है. और ये जो रिपोर्ट मारने की बात कर रहा है इसको ज़रा आप ब्लॉक मार दें तो अच्छी बात है. मैं मार दूँ ब्लॉक भाई, तुमको मज़ा आ जाएगा तुमको. और रेडमी वॉच लॉन्च हुई 4000 की, है ना. सो ठीक है. तो बात यहाँ पर ऐसी आ जाती है, स्क्रीन जो है वो 60 हर्ट्ज की है. अब ये Redmi Note 10 है जिसको थोड़ा इंप्रूव कर दिया गया है. Redmi Note 10 में स्नैपड्रैगन 678 था जो कि गेमर्स के लिए इतना अच्छा नहीं था. और Redmi Note 10 में 48 मेगापिक्सल का कैमरा था. Redmi Note 10 जो था वो बस ठीक है, यही वो मेन चीज़ें हैं जो कि इंप्रूव कर दी गई हैं. वो ये कि जो स्नैपड्रैगन 678 की जगह G95 डाल दिया गया है, वो थोड़ा अच्छा ज़्यादा परफॉर्म कर देगा आपको. और साथ ही में यहाँ पे पबजी ज़्यादा अच्छी चल जाएगी. अब पबजी नहीं, बैटल ग्राउंड्स इंडिया आ रही है, बैटल ग्राउंड्स इंडिया. तो वो आप बैटल ग्राउंड्स इंडिया को दोबारा से बढ़िया से चला पाओगे. और वो G95 ज़्यादा अच्छा चला पाता है जी. यहाँ पे COD भी अच्छी चल जाएगी, एसफॉल्ट भी अच्छी चल जाएगी, दिक्कत की बात नहीं है. और ये है कि इसमें आपको कैमरा 64 मेगापिक्सल कर दिया है, तो थोड़ा कैमरा बेटर हो जाएगा. अब इसका डायरेक्ट जो कॉम्पिटिटर वो बनता है वो है Realme 8. Realme 8 को अगर देखें तो वहाँ पर भी G95 है, वहाँ पर भी 5000 mAh है, वहाँ पर भी 30 वॉट की चार्जिंग आई थिंक. और वहाँ पे भी सुपर एमोलेड देखने को मिल सकती है, यहाँ पे भी सुपर एमोलेड है. वहाँ पे Realme UI देखने को मिलता है. Realme UI जो है वो बहुत बेटर है MIUI से. तो मेरे को सॉफ्टवेयर वाइज Realme बहुत बेटर लगती है, बट कैमरा जो है ना वो हमेशा Redmi के बेटर होते हैं Realme से. तो यहाँ पे शायद Redmi का कैमरा Realme 8 से बेटर हो सकता है, नो डाउट. ठीक है. बाकी Realme में 128GB है सब बोल रहे हैं, ठीक है, ये भी अच्छी बात है ना. Realme अगर 128GB के साथ आता है, ये 64GB दे रहा है, तो भाई ये भी देखने वाली चीज़ है. और अगर 16000 वाले वेरिएंट पे जाते हो तो Redmi Note 10 Pro क्यों नहीं लेंगे. प्रो बहुत ही बेटर है, वहाँ पे तो हमें 120 हर्ट्ज की सुपर एमोलेड देखने को मिल रही है, अमेजिंग 64 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल रहा है, अमेजिंग बैटरी, अमेजिंग चार्जिंग, अमेजिंग सब कुछ देखने को मिल रहा है वहाँ पे. तो हम
प्रो मॉडल के साथ जाना चाहेंगे, इसके साथ तो नहीं जाना चाहेंगे। और रेडमी वॉच में मेरे को इतना कोई इंटरेस्ट होता नहीं है, तो क्या ही होगा इनकी वॉच में इतना खास। चलाने को मिलती तो देखते, अभी यूनिट्स ये भेजते नहीं, इनको पता है सच बोल देता है बंदा, तो यूनिट्स नहीं देते हैं ये लोग, तो सच्चाई की तो कीमत नहीं है ना। तो भाई हाँ, फ़ोन ठीक है, 15,000 में ऐसा नहीं है कि बुरा फ़ोन है, अच्छा फ़ोन है। ओवर प्राइस बोल रहे हैं सब, बट हाँ डेफिनेटली ओवर प्राइस। हम कह सकते हैं ये फ़ोन 14,000 में दे सकते थे, क्योंकि 12,000 में आया हमारे पास Redmi Note 10, 16,000 में इतना बड़ा तगड़े गैप है स्पेक्स में Note 10 Pro में। ये फ़ोन बीच में होना चाहिए था कहीं 13,500-14,000 का, वो ज़्यादा बढ़िया बनता, तो फिर वो मज़ेदार था। अभिषेक अपना काम, तू भाई मैं अपना ही काम कर रहा हूँ, मैं अपना ही काम कर रहा हूँ, तेरा चैनल नहीं है ना भाई, मेरा है, मैं अपना ही काम कर रहा हूँ। स्टीरियो स्पीकर्स हैं, ये एक थोड़ी अच्छी बात है, और Z एक्सिस की मोटर देखने को मिल जाती है, वो भी थोड़ी अच्छी। मैंने चीज़ नोट की थी, मैक्स के अंदर ना थोड़ा सा वो ज़्यादा ही वाइब्रेट करता है, थोड़ा आर्टिफिशियल सी लगती है वो, इतना मेरे को मज़ा नहीं आया था उसका। अच्छा है बट नेचुरल फीलिंग नहीं आती है, मतलब वो ना प्लीजिंग फीलिंग नहीं आती है वाइब्रेशंस की। तो MIUI 12.5 आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है, ये भी अच्छी बात है, और इसका जल्दी एक अपडेट भी आने वाला है, बोल दिया इन्होंने Note 10s में, ये भी अच्छी बात है। कौन कौन लेने वाला है तो मेरे को पहले ये बताओ, कौन बुक कर रहा है 18 तारीख को 12 बजे, इसको कौन खरीदने वाला है ये बताना मुझे। बट हाँ, सॉफ्टवेयर जैसे कि यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं हमारे PUBG वाले, कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर ही टट्टी है। सॉफ्टवेयर एकदम पसंद नहीं है मेरे को MIUI, मेरे को अभी भी मैंने Note 10 Pro Max यूज़ किया, मेरे को बहुत बग्स दिखे उसमें, कहीं पे लैग करता है, कहीं पे कुछ होता है, कहीं पे वो अटकता है, कहीं पे क्या कुछ गंदी गंदी चीज़ें हैं उसके अंदर, तो मज़ा तो नहीं आता चलाने में। तो यहाँ पे भी, और DCI के बारे में शायद ये एक डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में अलग से एक शॉर्ट में वीडियो बना दूंगा, ठीक है, तो उसके लिए आप वेट कर लो। और मैं लूँगा भाई, ठीक है, आनंद भाई कह रहे हैं मैं लूँगा, आशीष भाई कह रहे हैं लूँगा, एक हमारे राहुल भाई कह रहे हैं Note 10 लूँगा, ओके, नहीं लेना है टट्टी फ़ोन, क्या बात है। तो ये ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं जिनको फ़ोन नहीं पसंद आया, और ऐसे भी कमेंट्स हैं जिनको फ़ोन पसंद आया है। और भाई रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्स की है, 90 हर्ट्स नहीं है, 120 हर्ट्स नहीं है, 60 हर्ट्स है। और इम्प्रूव यार 12.5 को होना चाहिए अमनप्रीत, बट पता नहीं, आई डोंट नो कितना इम्प्रूवमेंट मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, ये तो फ़ोन जब हाथ में आएगा तो पता चलेगा। अभी के लिए तो कुछ नहीं कह सकते, अभी के लिए नहीं ले सकते। तो आप मेरे को बताओ, एक वीडियो बनाते हैं जहाँ पे हम कंपैरिजन कर दें Redmi Note 10s वर्सेस Realme 8, कैसा रहेगा। या फिर आपको Redmi Note 10s वर्सेस Redmi Note 10 Pro, पर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं इतना खास। Realme 8 के साथ कर सकते हैं छोटा सा वार्तालाप जिसमें हम बात करेंगे। 5G नहीं है, बिग फैन, थैंक यू जशन, और बिग फैन ओके। PUBG ग्राफिक्स कितना होगा, जहाँ तक मुझे लगता है ये होगा स्मूथ प्लस अल्ट्रा, एक्सट्रीम नहीं जाएगा ये, जहाँ तक मुझे पता है। और मेरा नूतन पर कैमरा खुलता नहीं है, मेरा नूतन पे कैमरा खुलता नहीं है, नूतन गलत है। 60 हर्ट्स हाँ कह सकते हो आप, अभी 15,000 तक ले गए हो तो फिर तो दे देते, 90 हर्ट्स तो दे देते, अच्छा लगता, मज़ा आता। बाकी Note 10 Pro लिया है, अच्छा है। इन Note 1 Pro कब आएगा, हम वेट कर रहे हैं, माइक्रोमैक्स की तरफ से जब भी कुछ नया आएगा हम बता देंगे। मामपू गेमिंग लव यू ब्रो, मोबाइल ₹5,000, मोबाइल ₹5,000। हेलो भैया, हेलो चंद्रकांता जी, क्या हाल है। पोको X3 वर्सेस 10s, यार आज के टाइम पे मैं कहूँगा फिर आप 10s ले लो, बेटर चॉइस। और GFX से सब जाएगा, GFX से तो सब हो जाता है। आई एम टेकिंग मोटो G40 फ्यूजन, बहुत बढ़िया है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, मज़ा आएगा आपको चला के, सो दिक्कत की कोई बात नहीं है, आप ले सकते हो। और बाय नोकिया के कोई ढंग के फ़ोन भी तो आए हैं रवि भाई, ढंग के कोई फ़ोन नहीं निकाल रहे हो, बेकार फ़ोन निकालते जा रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा। और GFX से 90, GFX तो कुछ भी कर देगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स फॉर क्लियरिंग क्वेरीज, थैंक यू आशीष। 15,000 का 60 FPS का फ़ोन बता दो, 60 FPS वैसे तो G95 में मिल जाते, बट अभी तक ये कंपनी ने काम ही नहीं किया इनके साथ, PUBG वालों के साथ, कि 60 FPS मिलता, ऑप्टिमाइज ही नहीं हुआ है। बट आपको G90T वाले मिल जाएंगे जो कि आपको 60 FPS दे देंगे। ओके थैंक्स। ओके, स्नैपड्रैगन का बेटर है या मीडियाटेक का बेटर है, हीट होता है। देखो यार, स्नैपड्रैगन लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा अच्छा है, मीडियाटेक गेमिंग के लिए आजकल थोड़ा सा बेटर फोन निकाल रहे हैं।
बट ठीक है, दोनों अच्छे हैं, ओवर हीट डिपेंड करता है। नो डिफरेंट बाय द वे 12.5 और जो भी MIUI 12 सेम ही है। बिल्कुल यार, स्मेट सेम ही है, ऐसे ही बोल देते हैं ये रेडमी वाले, आ जाते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, MIUI इंप्रूव कर दी, कभी नहीं होती। भैया प्राइस क्या है? 15,000 का आया भाई हर्ष, और 15,000 में ले जाए वो तो ले सकते हो ऐसा फ़ोन, ठीक है। पोको X3 Pro कैसा है? बढ़िया है, गेमिंग के लिए चाहिए तो आप ले सकते हो, गेमिंग अच्छी हो जाएगी इस फ़ोन में। और Realme 8 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है गाइस, अभी के लिए आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइव अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो। अभी तक जिसने लाइक नहीं ना किया वो मैं बता रहा हूँ लाइक कर दो, माता रानी पाप लगा देगी। वॉइस इज स्वीट, थैंक यू राजन। और ठीक है चलो मैं आपको फिर मिलता हूँ। अब देखता हूँ कुछ अगर तैयार कर पाता हूँ शाम तक तो मैं आपको वीडियो दे देता हूँ, जहाँ पे हम कंपैरिजन वगैरह थोड़ा सा कर देंगे। F62 ले सकते हो अगर 17-18 हज़ार में अच्छे आजकल ऑप्शन मिल रहे हैं वो, तो आप उसको ज़रूर से देख लेना। बाकी चलो टेक केयर गाइज, बाय बाय।